Yes. So last we did this question, isn't it? And we were to start with the composition, that how closing stock is treated while preparing trial balance. It's not a new concept for you, it's an old concept. While teaching it there, मैंने बताया था that जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे बड़े काम की चीज है, और आज वो दिन आ चुका है. So everybody is supposed to put the heading in the copies, only the heading, nothing else. Treatment of closing stock while preparing trial balance. Treatment of closing stock while preparing trial balance. And trial balance appears as a statement having a list of debit balances and credit balances. Yes or no, Chalan? Yes or no? चलिए. सो एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, दो ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे चलन. एंड इन बोथ द ट्रायल बैलेंसेस वील बी सीइंग टू इट कि क्लोजिंग स्टॉक का प्लेसमेंट कहां पे और कैसे होगा. सो रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, वी आर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. सो चिल्ड्रन, इट इज हेड ऑफ अकाउंट, debit balance and credit balance. Requesting everybody to prepare two trial balances extending up to just 4 lines each. Debit balance and credit balance. Draw the format very quickly, children. Chalo. And already a trial balance is pre-drawn for your convenience in the question itself, constituting the list of debit balances and the list of credit balances. The only difference is this, that the credit balance list constitutes only two items. One is sales and other is purchase return. So people understand where do we put the things in trial balance, children? चलिए, ट्रायल बैलेंस तो सबको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक कैलकुलेशन हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था चिल्ड्रन, अगर लोगों को याद हो तो, याद होना चाहिए. द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. द फॉर्मूला वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस purchases minus purchase return minus closing stock plus direct expenses. Am I correct to this? Am I correct to this? According to this formula, opening stock is 12,500. The value of purchase is 1 lakh minus purchase return sounds to be how much, children? 5,000. Then we have wages in the category of direct expense, carriage inward, power, coal and gas. 7,500 plus 2,500 is what, children? 10,000 plus 1. Excellent answer. And minus what, children? 14,000. कुछ ऐसा ही करते थे while preparing trial balance. Children, कुछ ऐसा ही करते थे. So what is the value of cost of goods sold, children? 12,500 plus 1 lakh minus 5,000 plus 11,000 minus 14,000. Get me the answer fast. Get me the answer quickly, children. What is the value of so-called COGS? बताइए. अरे easy है भाई. 1 lakh plus 12,500 is 112,500 plus 11,000 is 123,500. 123,500 में आप माइनस कर दीजिए 5,000, कितना आएगा? 118,500. 118,500 में 4,000 माइनस करिए, उसमें 10 और माइनस कर दीजिए. 1,04,500. This is your COGS. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? सो अब आपने पढ़ा हुआ है कॉम्पोजिशन
if trial balance constitutes cost of goods sold, that is 104,500 children, it means इसके अंदर opening stock is there, yes or no? Purchase is there, yes or no? Purchase reduction has been deducted. Wages is there, carriage inward is there, and power coal and gas is there. तो अगर आपने 1,04,500 लिख दिया तो आपने this and this सबको लिख लिया? सबको लिख लिया? Dog bite 1 2 3 4 5 6 7 इंजेक्शंस डॉक्टर एक्स लगा रहे हैं और डॉक्टर वाई एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं. किस डॉक्टर के पास आप जाना चाहेंगे बच्चों? एक इंजेक्शन वाले के पास. यू वुड लाइक टू विजिट दैट डॉक्टर व्हिच इंजेक्ट्स ओनली one vaccine and dog bite gets cured, yes or no? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. What I am saying, COGS is the substitution for purchase return, opening stock, purchases, direct expenses, as well as children closing stock. So if you have written COGS, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Trial balance is congruent. Trial balance is congruent. मैं अपनी बात को एक बार चेक कर लेता हूं. Whatsoever I have spoken is correct or wrong. 100% मेरे को उम्मीद है मैंने गलत ही बोला है, क्योंकि अगर मैं सही बोल दूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अंदर क्यों आएगा. ध्यान से सुनिएगा. 12,500 is the value of opening stock. 1 lakh minus 5,000 is what, children? 95,000. 75 25 is 10 and this is 11. So I have written opening stock here. I have written purchase less purchase return, and I have written what is called as direct expenses. Please add this, children. Please add this. 0 0 5 5 6 7 8 9 10 11. It's 1,18,000 items which constitute COGS are purchase return deducted, opening stock purchase direct expense added, yes or no? As well as we have deducted what, children? Closing stock. ये भी हमने माइनस कर दिया है. तो COGS के अंदर ये सब कुछ आता है. तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर सेम आना चाहिए. क्या आ रहा है बच्चों सेम? इफ वी से कि ये सारे रेड टिक्ड आइटम्स COGS के अंदर हैं, तो COGS एंड जो ये वैल्यू आ रही है इट शुड बी सेम. इज इट बीइंग सेम, चिल्ड्रन? क्यों? क्योंकि आपने 12,500 ऐड किया, you added 1 lakh, you added direct expenses and you deducted purchase return. इस कैलकुलेशन में बस इतना ही किया गया है. What's the answer? Further deducting 14,000 rupee, we land up to get what? तो can we say children कि हमारा ये वाला ट्रायल बैलेंस एंड ये वाला ट्रायल बैलेंस सेम इंफॉर्मेशन डिपिक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज आइटम्स? सेम इंफॉर्मेशन डिपिक्ट कर रहे हैं. अगर सेम डिपिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1,04,000 है तो यहाँ 118 क्यों आ रहा है? यहाँ 118,500 है तो यहाँ 14 क्यों आ रहा है? बिकॉज वी हैव एडेड ओपनिंग स्टॉक, एडेड परचेज माइनस परचेज रिटर्न, एडेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दैट्स इट. इन सबका टोटल क्या आया? 118,500. बट व्हेन दीज थिंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू COGS, बीच में आपने और किसे माइनस किया था? समझ में आ गया? सो क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम विच इज अ पार्टिसिपेंट फ्रॉम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. ये बाहर का आइटम है. तो जब आपने सो कॉल्ड इन रेड आइटम्स को टिक किया चिल्ड्रन, तो हमने क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. परचेज इज हेयर, इट इज हेयर ऑल्सो. Purchase return got deducted here, it got deducted here. Direct expenses are shown here, it is shown here. That's it. Closing stock trial balance के अंदर नहीं है, but it is duly present while calculating COGS. So trial balance के अंदर का composition आपको क्या आंसर दे रहा था? Just now we have calculated, children. 1,18,500.
So data inside the trial balance is equivalent to 118,500. बट जब आपने उसको COGS में कन्वर्ट किया तो यू डिडक्टेड दिस और कहां तक पहुंच गए? अगर मैं इस ट्रायल बैलेंस को इस ट्रायल बैलेंस के इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं तो मेरे को अंदर वैल्यू कितनी चाहिए? 118,500? क्यों 14500 क्यों चाहिए? सो रहे हो क्या? आंसर चिल्ड्रन, ये वाला ट्रायल बैलेंस आपको COGS कितना शो कर रहा है? 104,500. 104,500. But the data that we have taken from the trial balance shows how much? Can we say that these two are equivalent? No. Why they are not equivalent? Opening stock plus purchase minus purchase return plus direct expenses gives us the value 118,500. Whereas cost of goods sold is, so किस एक आइटम की वजह से this is becoming this closing stock? Can we say BCom, a 3-year course, is equal to integrated BCom MCom 5-year course? No. भाई वो 3 साल की पढ़ाई अलग है, 5 साल की पढ़ाई अलग है. So ये डेटा जो रेड कलर से मैंने शेड किया है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का डेटा है. क्या वैल्यू शो कर रहा है? And it is showing how much? क्या हम बोल सकते हैं ये वाला ट्रायल बैलेंस और ये वाला ट्रायल बैलेंस सेम है? किस वजह से डिफरेंस आ रहा है चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक का डिडक्शन इसमें नहीं हुआ बट इसमें हो चुका है. सो व्हाट शुड आई डू? दैट 1,04,500 becomes 1,18,500 plus 14,000 in the name of what? So people understood? पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में, सही कुछ याद आ गया? याद आ गया? पक्का नहीं आता? सेम ऐसी चीज बताई थी मैंने. सो या तो आप ये वाला ट्रायल बैलेंस ले लीजिए या ये ले लीजिए, बात एक ही है. सो ईदर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट 10 people, यू ऑर्डर फ्रॉम आला काटे मेन्यू या कॉम्बो मंगवा लीजिए, बात एक ही पड़ती है. समझ में आया कि नहीं? पक्का? सो चिल्ड्रन, नाउ दिस ट्रायल बैलेंस, द मिनिएचर वन and this one happens to stand at equivalence level. समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? कंफर्म? कंफर्म? समझ में आ गया? चलिए, सो प्लीज पुट दिस. और एक चीज इसमें और लिखते हैं, एक नई चीज आज आपको पढ़ाते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेजेस. सर व्हाट इज दिस? द फॉर्मूला इज opening stock plus purchases minus purchase return and closing stock. What have I not taken in comparison with the COGS formula? मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं किया. आई रिपीट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं किया. So opening stock is how much, children? Purchase how much? Less purchase return how much? समझ में आ गई बात? Minus closing stock how much? Tell me the answer. What is adjusted purchases amounting to rupees, children? 1 lakh plus 12,500 is 112,500. Minus 5 is 1,07,500. Minus 14,000 would be what, children? 93,500 rupees. Recalculate कर लेते हैं. 12,500 plus 1 lakh minus 5,000 and minus 14,000. It's coming 93,500, children. It's coming 93,500. Yes, sir. Can we say ये वाला ट्रायल बैलेंस और ये वाला ट्रायल बैलेंस सेम है? बहुत कुछ गायब है सर, बहुत कुछ गायब है. क्या क्या गायब है? आपने बच्चों वेजेस लिखा है? आपने कैरेज इनवर्ट पार कोल गैस लिखा है? नहीं लिखा. सो यू नीड टू पुट इट देयर और नॉट. फॉर अवॉइडिंग सम स्पेस मैं एक साथ लिख देता हूं. सो इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 11,000. चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. You have written wages also, carriage inward also, par coal and gas also. So earlier it was children 93,500 na?
ये 93,500 था ना एडजस्टेड परचेज, 93,500 था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 12,500 plus 1 lakh is what? 1,12,500 minus 5,000 children, 1,07,000, and these direct expenses how much? 118। तो ये सब मिला के 118,500 हो रहा है बच्चों, क्या ये मिला के 118,500 हो रहा है? नो नो नो। क्यों ये हमेशा कम हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। सो चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक if appears inside the trial balance would establish parity in all. Now this trial balance also shows the effect of 118,500 and this trial balance also shows the effect of 118,500. ये रामायण महाभारत मैंने आपको इसीलिए सुनाई ताकि आपको पता लगे कि why it has to be written here. I repeat, why it has to be written here. Because during COVID pandemic, many people got injected with n number type of vaccines and medicines, but those people who live in rural areas, villages, they didn't got infected with this pandemic. Why? Because they already had good immunity. They didn't used to eat ever what is called as junk food. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक समझ में आ गया, इसलिए उनको इन सब की जरूरत नहीं पड़ी। तो यू शुड नो द रीजन। आई रिपीट, यू शुड नो द रीजन बेसिकली। नहीं तो आप कल को जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ये वाला ट्रायल बैलेंस देख के और ये वाला ट्रायल बैलेंस देख के, यू विल क्वेश्चन मी, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट पुराने ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट है। इट्स डिफरेंट। व्हाई? समबडी वुड से ये मैगी टोमेटो केचप है, इट्स डिफरेंट। ऐसा नहीं है, इसका रीजन कुछ और है। रीजन इज क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट करते टाइम हमने क्या कर दिया था, फिर से ऑपोजिट साइड पे लिख के माइनस करने की जरूरत। जब आप क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स क्रेडिट में लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज टर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में लिखते हो, व्हाट हैपेंस? एक तरह से नेटिंग होती है, एक तरह से नेटिंग। व्हाइल डूइंग एडजस्टेड परचेजेस कैलकुलेशन हम ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हैं, एंड नाउ योर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स वेयर चिल्ड्रन? अगेन आंसर, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स वेयर? Trial balance has which 5 type of identities children? Asset. So closing stock belongs to the category of asset. Assets would appear in balance sheet or trading account children. Asset तो बैलेंस शीट का आइटम है सर। अभी तक तो हम लिख रहे थे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का एक रीजन था। व्हाट इज दैट रीजन, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब आप अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं चिल्ड्रन, तो ये अब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। आई रिपीट, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड। व्हाई इज इट सो? 90% आंसर आई हैव गिवन यू, क्योंकि हम ऑलरेडी COGS कैलकुलेट करते टाइम उसको ट्रीट कर चुके हैं और यही काम आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे थे। कैसा है? लेट यू नो, नॉट टू वरी। बस अभी आपको इतना ही समझना है दैट क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस अंडर विच 2 कंडीशंस? When we have COGS and when we have adjusted purchases. In that case ये आपको बाहर नहीं नजर आएगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हाय राम कहां गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। गॉट इट? अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको कैसे ट्रीट करना है, तोता अप्रोच आई हैव टोल्ड यू, लॉजिकल अप्रोच आई विल बी टेलिंग यू। प्लीज अपडेट these 2 trial balance children quickly. These 2 conditions should be very clear. Closing stock appears inside the trial balance when COGS is given or when adjusted purchase is given. तो पहले जरा ये समझ लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में हम लिखते क्यों हैं। तो ये अनटोल्ड मिस्ट्री थी। आपको नजर आ रहा होगा ऑन द डेबिट साइड वी हैव ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 12,500. नेट परचेज, wages, carriage inward and par how much? 1,000 मिला के सब 11। इतना सबको समझ में आ गया? 12,000 रुपी, सॉरी 12,500 रुपी plus 95,000 plus 7,500 plus 2,500 plus 1,000. This all total is what children? इन सबको टोटल करके बताइए कितना आएगा? 1,18,500 आएगा? I doubt. 12,500 plus 95,000 plus 11,000. चलिए
Doubt clarified. Children, this is called as cost of goods available for sale. This is the total goods that we possess. I repeat, this is the total goods that we possess. इसके दो bifurcations हो गए. One which we didn't sell is called as what? How much? 14,000. तो 1,18,500 में 14 वाले गुड्स आप नहीं बेच पाए, बाकी आपने बेच दिए. तो अदर बाइफर्केशन इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दैट इज 1,04,500. इतना समझ में आ गया? एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेल रिटर्न? 1,40,000. So you sold all goods or part of the goods? Answer children. Sold all or part? Very good. So out of 1,18,500, we sold only a part whose cost is how much? At what value? So children, we'll be getting a gross profit of 35,500. सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात चिल्ड्रन? अगर मैं यहां से इस क्लोजिंग स्टॉक को गायब कर दूं, the total in that case would be what? क्लोजिंग स्टॉक को मैंने उड़ा दिया, 1,40,000 टोटल आएगा, and this total is 1,18,500. जरा आप डिफरेंस निकाल लीजिए बच्चों, एंड लेट मी नो द आंसर. कितना आएगा? 21,000. Did we sell all the goods as per the question? Did we sell all the goods as per the question? Some are still unsold. कुछ goods बचे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा. These goods are sold at 140 or these are sold at 140. Goods worth this much is sold at 140 or this much sold at 140? 1,04,000 worth of goods sold at 140. What should be your true profit? हम कितना लिख के बैठे हैं? Why this error is being done? Because हमने गड़बड़ी कर दी किस चीज में? थोड़ा सा अच्छा बोला करिए प्लीज. Application of matching concept. Is this the cost of the goods which have been sold? No, this is the cost of goods sold. तो आप 140 की सेल में से 118,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 140 की सेल में 1,04,500. So you need to match revenue 140 with the cost of those that we have sold or with the cost of all those. तो आपकी मैचिंग गड़बड़ा गई बेसिकली. पिंक कलर की शर्ट पहन ली, येलो कलर का ट्राउजर पहन लिया, घर से बाहर निकल गए और गुस्सा रहे लोग, हंस क्यों रहे हमारे ऊपर? समझ में आई बात? गलत मैचिंग हो गया, ये गलत मैचिंग हो गया. लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो 140 बीइंग द सेलिंग प्राइस, जीपी निकालने के लिए माइनस 118,500 और 140 द सेलिंग प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग जीपी माइनस 1,04,500. अब समझ में आया why do we write closing stock on the credit side of trading account? Because all items debited represent what? Total cost. What? Out of that some goods remain unsold. अगर आप unsold को माइनस नहीं करेंगे, क्या आपका COGS आएगा? अगर आपका COGS बच्चों गलत हो गया तो सेल से कंपेयर करके क्या ट्रू प्रॉफिट मिलेगा? इट्स एन अकाउंट और अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ट्रेडिंग अकाउंट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इट्स एन अकाउंट. तो भाई अकाउंट्स में आप माइनस कैसे करेंगे? दिस टोटल इज हाउ मच चिल्ड्रन? एंड यू नीड टू रिमूव समथिंग फ्रॉम हेयर, सो यू विल बी पुटिंग इट ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. लॉजिक समझ में आ गया?
तो अगर आप क्रेडिट साइड पे स्टॉक नहीं लिखेंगे, व्हाट वुड हैपन? यू हैपन टू डेबिट हायर वैल्यू. आई रिपीट, टू यू हैपन टू डेबिट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. तो आपने टोटल गुड्स जो पोजेस किए अपने पास, इट इज ऑफ हाउ मच? 118. डिड यू सेल ऑल ऑफ देम? नो, वी सोल्ड ओनली दिस पोर्शन. क्या इस पोर्शन ने प्रॉफिट दिया? बट ये इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा है. बट बच्चों, जब ये प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, क्या आप इसे अपनी कॉस्ट मानेंगे? एब्सोल्युटली नॉट. तो टेक एन एग्जांपल कि आई हैव अ स्टेशनरी शॉप और मैंने 3 रूलर्स परचेज किए. हाउ मेनी? 3 children, each having a cost price of ₹10. This was unsold. How many did we sell? 2 rulers हमने बेच दिए. And the selling price is 39 rupees. How much? So 30 rupee worth of product sold for 39 or 20 rupee worth of product sold for 39? 20 rupee, na? So my profit would be 39 minus 30 or 39 minus 20. Logic समझ में आ गया? So this yellow circle is called as cost of goods available for sale, COGS. And this rectangled arrow is known as COGS. तो COGS and COGS में फर्क होता है. समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? मम्मी ने 5 आलू पराठा बनाया. यू कंज्यूम्ड 4 एंड सेड बहुत बढ़िया है. वैलिड अपलॉज है ये. यू ईट नन एंड सेड बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. ये अपलॉज या एप्रिसिएशन नहीं है. सो कैन वी से 140 minus all goods cost equals to GP, children? Yes. Wrong GP. It is wrong GP. What is correct GP, children? 140 में जो आपने बेचा, it was worth only 104,500 and not 118. So how you are going to reduce your 118 to 104,500? By removing those goods which have not been sold, जो बिके ही नहीं. अब समझ में आया why closing stock is credited to trading account? Technical answer, application of matching concept. इतना लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा. डेबिट टोटल रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट. जो बचा है वो या तो इसमें से होगा या तो इसमें से होगा. इसी में से तो होगा. जो गुड्स बच गए नहीं बिके, या तो वो लास्ट वाले होंगे और या तो आपने उनको खरीदा होगा. आर दे गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट? बेचा ही नहीं तो बेनिफिट किस बात? No, sir. When you are not getting benefit, should you be assuming that as your cost? No. तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस. मैथ्स अप्लाई नहीं हो रही है तो माइनस की जगह क्रेडिट हो जाएगा. सुनाई पड़ गई बात चलन? सुनाई पड़ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, कनेक्टिंग अगेन एंड कंटिन्यूइंग फर्दर. चलो, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का?